Hi, this is Andrani and I have scored 99.4% in my 10th post without any coaching, and this video I'll talk about the best timetable for you to follow to get above 98% in your 10th post. As usual, I'll keep the video very short and to the point with a special message at the end, so video end तक देखना। बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि what is the ideal timetable to study for both? क्या सच्ची टॉपर्स 12 hours पढ़ते हैं, पूरा वेकेशन का में पढ़ते रहना चाहिए? So what was my timetable like? I'll be honest, I did not have an exact timetable for every single hour. हर एक घंटा ट्रैक करना इज इम्पॉसिबल एंड मैं ये तुमको रेकमेंड भी नहीं करूंगी। व्हाट आई वुड डू कि एक दिन पहले मैं अपना डेली टारगेट सेट कर लेती थी, स्मॉल अचीवेबल टारगेट्स, एंड उनको ही फॉलो करती थी। And if I had to summarize this entire video in one line, this would be it, that is set daily targets the night before. Normal day for me usually ऐसा होता था कि from 7:20 to 3:30 I had school, फिर घर आते आते 4:30 हो जाता था, and from 5:30 around after taking a break I would start studying. दिन में मैं max 3 to 4 hours ही पढ़ती थी, उससे ज़्यादा नहीं, and that includes homework and assignments. मैं try करती थी क्लास में ही मैं अपने homework and assignments खत्म कर लूँ in order to save time. And yes, I was that kid जो बस में भी पढ़ती थी, but that was only when कहीं घूमने जाना था तो उस दिन का सेल्फ स्टडी मिस आउट होगा या तो कोई टेस्ट आ रहा है, दैट इज ओनली व्हेन आई स्टडी इन बस। नाउ उसके बाद डिनर एंड फाइनली स्लीप। नाउ व्हाट वाज अ टाइम टेबल लाइक ऑन वीकेंड्स? सो आई वुड जस्ट मेक श्योर कि आई एम नॉट लाइगिंग बिहाइंड क्लास, कि क्लास में जो हो रहा है उसके पीछे ना रहूँ मैं, एंड इफ पॉसिबल इफ आई हैव एक्स्ट्रा टाइम एक चैप्टर या आधा चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लेती थी आगे। एंड मैं वीकेंड्स में कभी भी 10 to 11 AM के पहले उठती नहीं थी, एंड माई स्टडी आवर्स वेरी फ्रॉम 3 to 4 hours ऑन अ रिलैक्सिंग डे टू मे बी 6 to 8 hours जब कोई टेस्ट आ रहा होगा। एंड इट्स अ फैक्ट कि फर्स्ट के 1 या 2 रीडिंग्स में barely कुछ दिमाग में घुसता है। द मोर टाइम्स यू रिवाइज द इजियर इट विल गेट। डू टॉपर्स सैक्रिफाइस स्लीप इन ऑर्डर टू स्टडी? अ बिग नो। मैं रात को 12 बजे के पहले सोती थी, एंड आई वाज नेवर द काइंड जो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ेगी। इट नेवर वर्क फॉर मी, एंड आई ऑल्सो नो कि डजंट वर्क फॉर मेनी ऑफ यू। सो बेकार का सुबह 5 बजे उठ के अपना स्लीप खराब करना छोड़ दो। सो आराम से नींद कंप्लीट करो एंड देन स्टार्ट योर डे विद अ फ्रेश माइंड। एंड डू टॉपर्स स्टडी 12 hours in a day? Again, no. As I've explained before, with school I would study maximum 3 to 4 hours, and on weekends around 6 to 8 hours. Now of course until it's exam season, तब तो और option नहीं है। Another question, should summer vacations be completely spent in studying? A big no again. Spend in doing projects, assignments, spend time with your family, enjoy your vacations. देखो आधी चीज तुमको याद रहेगी ही नहीं after vacations, तो क्या फायदा भी पढ़ के। Study maximum 3 to 4 hours in a day, that is if you feel like it. Otherwise मत पढ़ो, projects कर लो। Now breaks कितना लेना है? Take a break whenever you feel like it. Avoid burnout at all cost. Now about coachings, as I've said before, coachings are not at all required for class 10 boards. But even then, if you feel the need for it, then of course take it. But make sure that you're not sacrificing your time of self-study. Now going by old traditions, if you watched the video till here, comment loyal gang and I'll pakka reply to you. Now special advice for those that made it till here. Prioritize your mental health. आराम से पढ़ो. ये कोई war नहीं है. It's just an exam. People all over social media, and in fact people in general, hype up this exam a little too much. I know that you want to do well, even I did, but just make sure that this exam is not costing you your sanity or your health, because the fact is that you are more important than any exam you ever give. Now finally, all the best.